لٹل پاکستان بروکلن میں پاکستانی امریکن ایسوسی ایشن آف نیو یارک کی جانب سے آشیانہ ڈے کیئر پہ جشن آزادی پاکستان کا ایک رنگا رنگ پروگرام منعقد ہوا، جس میں قونصل جنرل آف پاکستان محترمہ عائشہ علی، ڈسٹرکٹ اٹارنی ایرک گونزالز، کانگریس وومن ایوٹ کلارک، NYPD چیف میڈرڈ، NYPD چیف شولز، امام طاہر، اپنا بروکلن کمیونٹی سینٹر اور پاسوو کے ممبران کے ساتھ ساتھ دیگر پاکستانی کمیونٹی کی مختلف تنظیموں کی خصوصی شرکت اور پاکستانی کمیونٹی کی ایک کثیر تعداد نے شرکت کی۔ اس پروگرام کی تیاری، گاڑیوں کی سجاوٹ اور لوگوں کا شوق قابل دید تھا۔ باربیکیو کا بھی انتظام کیا گیا۔ پروگرام کا آغاز تلاوت کلام پاک سے ہوا۔ دعائیہ حمد پیش کی گئی۔ جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا کر، مریضوں کی خاطر شفا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں۔ سب نے مل کر پاکستانی قومی ترانے میں شرکت کی۔ پاک سرزمین شاد باد، ایشور حسین شاد باد، تو نشان عزم عالی شان عرض پاکستان، مرکز یقین شاد باد۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد۔ اسپیشل ایوارڈز دیے گئے۔ مہمانوں نے پروگرام کے آرگنائزر محمد اسلم ڈھیلون اور محمد کریم بٹو کے انتظامات کو بہت سراہا۔ آئیے دیکھتے ہیں پروگرام کی کچھ خاص حصے۔ My name is Jarab Hanif. I am the host of this evening today with my co-host Begum Abbas is here. We are so honored. Pakistan Zindabad! Pakistan Zindabad! All right. Good to be here with the community. Pakistan Zindabad! We have new communicator, Chief NYPD communicator chief is here, Chief Madre. I'm happy to work with the chief. He's a great guy for the community. Thank you. Lieutenant Abbas, thank you. I want to try to Pakistan. I'd like to happy Independence Day to you all. It's truly an honor to be out here with you to celebrate your independence, all your contributions to this world. And I just want to say, continue to be strong, continue to stand together as a community, pray, support members of the police department. We're here to serve and work for you. And it's an honor to be here, so just thank you all. Thank you very much. Congratulations on another great Independence Day. The Pakistani community is a big part of keeping Brooklyn safe. So Little Pakistan, we thank you for what you do to help the NYPD. Assalamu alaikum. And once again, Pakistan Zindabad. Now I would like to request Consul General Aisha Ali to please say some words about this today's Independence Day in Little Pakistan. Give a big round of applause to Aisha Ali once again. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. پاکستان کی آزادی کا دن آپ سب کو بہت بہت مبارک. Very, very happy Independence Day to all of you. Thank you for being here today. It has been such an exciting experience for me. This is the second event on the same road, the same avenue, but it speaks about the jazba that we have here. And thank you so much, and I hope everybody is having a wonderful time and enjoying themselves. I'm very happy to see a large number of women, and I'm happy to see the youth and the young kids. So continue to have fun, continue to enjoy yourselves. Thank you for being here today. Thank you. Assalamu alaikum.
It's an honor for me, America Gonzalez, I'm your DA here in Brooklyn, but it's an honor for me to be here with all of you celebrating Pakistani Independence Day. When I look at everyone at the audience in the celebration, I think about my family. I think about a family who came from elsewhere and made a life here in Brooklyn. And so as your DA, I'm here to make sure that the Pakistani community understands that the DA is here to keep you safe, here to support you, here to celebrate, here to enjoy the culture and the food, and to make sure that the community understands that we will stand side by side every day of the year. And I want to thank our Consul General for being here with us. It's a great honor to be with you. It's a great honor to have you celebrating with all of us in the community of Brooklyn, and to our chiefs that are here from NYPD. Thank you. I have a citation of honor that I hope hangs proudly. I'm going to only read the bottom part, but on behalf of the 2.5 million residents of Brooklyn, we extend congratulations and best wishes to you and the entire Pakistani American community in New York as we celebrate the founding of an independent nation. My friend, thank you for the invitation. Thank you for the DA. We appreciate so in the busy schedule, so you give us the time. Thanks again for the Pakistani Independent Day. So I want to thank Aliyasha ji. So thank you so much. So I want to thank Chief Nadu. Thank you, Chief Shaw, Special Chief Shaw, and my brother Imam Tahir. So thanks for all NGO who's working with us. They came to support us for the Pakistani Okay, we have an award from Malik Khurram. He's the first elected district leader from the Pakistani community. We are so proud of you. Okay, now we want our Congresswoman Yvette Clark. Thank you so much for taking out time and joining us today. We know that you're so busy. We see you in Little Pakistan every other day. Thank you so much. We love you. We appreciate you. I want to hand over this mic to you to please say a few words. Thank Mr. Dilan and his team at Pani for bringing us all together today. Assalamu alaikum, everyone. It's certainly my honor, my privilege as we celebrate Pakistani Independence Day, 73 years of Pakistan independence, and here in Brooklyn, we have been the beneficiaries of those who have come to help build our communities, those who have come to contribute their talent, their skills to building Central Brooklyn. I want to acknowledge our wonderful district attorney, Mr. Eric Gonzalez, who has been doing, yes, give him a very big round of applause. He's an extraordinary man who has been doing extraordinary work. He has changed the definition of law enforcement in Brooklyn, and we are so proud of all that he's accomplished and he continues to do. You can find Eric Gonzalez in every community, and that's what makes him so wonderful. So let's give our DA another round of applause. We are also joined by Chief Madry? Yes. Well, you know, he's gone to the big place now in One Police Plaza, so I didn't know if he's still chief or he's got a new title, but this is a man, too, who has done so much across our community. We are so very proud of all that he has done. Let's give Chief Madry a very large round of applause. We're used to having him in Brooklyn, but now we have to share him with the whole city of New York. And of course,
our Pakistani is the captain now, Abbas, who has been doing such wonderful work in representing our community. Let us give another round of applause. We are so proud, we are so honored. Zagnam. Yes, Abbas, I know, everyone loves you. Let me just close by saying that as we celebrate today, let the children recognize that while you're here in the United States, many of you are born here. It is the culture, it is the values that your parents have brought from Pakistan that makes this community so very special. So when you grow up and you go on to do great things in building the community, remember all that your parents have done to make it possible, all that they gave up coming to the United States and building the community right here in Brooklyn, and that you have not had to depart from those values and those morals that they brought with them, but they will continue to build a community here from strength to strength. So let me finish by saying Assalamu alaikum, everyone. You know, when I go to Washington, my eye is on Kashmir and the liberation of the people of Kashmir. Assalamu alaikum. Thank you so much, Congresswoman Yvette Clarke. So इससे पहले कि मैं अपने next speaker को बुलाऊं, एक जोरदार नारा होना चाहिए, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद. Thank you so much everybody. हमारे पास बारबेक्यू कंटिन्यूसली जारी है. आप लोगों को जरूर माशाल्लाह रेस्टोरेंट की तरफ से आई थिंक स्पॉन्सर्ड है ये बारबेक्यू का अरेंजमेंट आप सबके लिए. और उसके साथ साथ मैं अपने नेक्स्ट स्पीकर को बुलाऊंगी, मिस्टर परवेज सिद्दीकी, a very well known leader of the community who does not want to come on the front, but he has supported many of us in the crowd and uplifted and helped us in personal and professional capacity. He is a true role model for our community. Mr. Siddiqui, give a big round of applause. I am humbled by your words. It is my pleasure to serve the community, and as we all know, the efforts of Yvette Clarke have been phenomenal. Our community loves her. She's ingrained into our community, and whenever she comes, it's like a homecoming. So I also want to thank the Consul General Aisha for taking the time out and coming today with her hectic schedule, running from one event to the other. It's not easy, but she is willing to accommodate and sacrifice. So on this occasion of the 73rd birthday, it is really an honor for her to be here. I also want to thank Eric Gonzalez for his excellent opportunity for us to meet with him and the time he took to come here after a busy schedule. It's an honor for you, for us to have you. Thank you so much. I also want to thank Chief Hedley and all the other chiefs who have come over here and supported us as always. It's an honor. I also want to recognize two individuals which I see from the Pakistan Day Parade, Ameem Shah and Iftikhar Khan. I want to give them a round of applause. They always do a remarkable job leading our community into the parade. So, and I also want to thank all the people who have been able to come over here and support this event. And I want to take this opportunity also to thank all those individuals who have supported the Mashallah restaurant and other vendors who have come out and helped us. Thank you so much, Pakistan Zindabad. Thank you so much, Mr. Siddiqui. Now I would like to give this mic to one rising star of our community, a young leader, Ali Rashid, AP PAC. Thank you so much for taking a charge and bringing and getting the youth involved. Ali Rashid, over to you. Assalamu alaikum everybody. How's everybody doing today? Alright, show some, this is Pakistan Independence Day. So, first of all, I would like to thank all the respected guests, all the Chief Madri, Chief Show, District Eric Gonzalez, our respected Aisha Ali, former Consul General. All I want to say, like we already talked about it, we are a rising power in New York. We need to be represented. We make sure our voices get heard. And as a
of today, census is still 50% down. So we have census team here. Make sure before you go today, everybody here should fill out the census. We have about 4 to 5 mobile questionnaire assistant available all over. Make sure you get done. Also, American Pakistani Advocacy Group is also handing out free masks and free green bandanas on this Pakistan Independence Day. So make sure, grab one and enjoy your Pakistan Independence Day. Thank you everybody who came in, and it's great to have all this organization come together under one roof. I want to say Happy Pakistan Independence Day and Pakistan Zindabad. Thank you Ali Rashid. अब मैं आप लोगों को बताते चलूं, हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के एक लेजेंडरी एक्टर आबिद काश्मीरी साहब. आप लोगों ने बहुत सारों ने उनको बहुत सारे ड्रामों में, फिल्मों में और स्टेज प्रोग्राम में देखा होगा. आबिद काश्मीरी साहब. Okay, now I want to invite Hameem Shah Saab, Iftikhar Bhatt Saab from Pakistan Day Parade. Please join us here, and Lodi Saab, kindly come here, join us here. जब तक हमें ज्वाइन कर रहे हैं हमीम शाह साहब, लोधी साहब और इफ्तिखार भट्ट साहब, जब तक हम आबिद काश्मीरी साहब से कुछ बातें सुनें. आवाज आ रही नहीं आ रही थे. पाकिस्तान जिंदाबाद. और भी यार की है रोटी ये नारा है. आज के दिन हम आजाद हुए थे और आजाद ही फिर रहे हैं. कोई भी नहीं करेंगे. इस रास्ते में आए हैं बड़ी दूर में, क्योंकि शादी साहबा ने हमीम साहबा इन्होंने मैंने बुलाया. पाकिस्तान कौन लोग खुश हैं. No problem. So I request Shahid Ahmad and Feroz Siddiqui to kindly present this award to Avid Kashmiri. लाला यार तस्वीर आगे आई हैं और वो लड़ना चाहती हैं सिटी काउंसिल के इलेक्शन के लिए. We have with us Fatima. नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ पाकिस्तान कम्युनिटी की एक इंतहाई आम और यंगस्टर बेटी जो कि सिटी काउंसिल का जैक्सन हाइट से इलेक्शन भी लड़ रही है, इनका नाम है फातिमा बारियाब. और आज ये कोनिया लैंड पे जो है पाकिस्तान के सिलसिला में जो इवेंट हुआ है उसमें शिरकत के लिए तशरीफ़ लाई थी. तो इनसे बात करते हैं. बेटा, सबसे पहले तो आप जो है पाकिस्तान के हवाले से ये अपने पाकिस्तानी जो कम्युनिटी का आपने इवेंट देखा है, इस बारे में कुछ बताएं. जी, सबसे पहले मैं पाकिस्तान इंडिपेंडेंस की आपको मुबारकबाद देना चाहती हूँ, क्योंकि ये एक बहुत ही हमारा पैशन शो होता है कि हम इस तरह के भी माहौल में, जब पेंडेमिक चल रहा है, हम निकल के आए, हमने अपना जज्बा दिखाया है. तो इसलिए मैं जो भी ये मैसेज सुन रहा है, मैं उसको ये कहूँगी कि बहुत बहुत मुबारक हो यौम आज़ादी. और मुझे बहुत अच्छा लगा ये देख के कि हम जो ये इवेंट्स कर रहे हैं और हम अपना कौम का जज्बा और मोरल हाई कर रहे हैं. माशाल्लाह से आप सिटी काउंसिल का इंतखाब भी लड़ रही हैं. जी. तो इस हवाले से आप अपने जो खर्चे के जो आपके डिस्ट्रिक्ट के पाकिस्तानी कम्युनिटी, इंडियन कम्युनिटी, बंगाल जो भी वगैरह हैं, उनके लिए आप अमेरिकन में आपने जो भी आपका नस्ल है उस बारे में आपको थोड़ा सा. श्योर. मैं जैक्सन हाइट्स में डिस्ट्रिक्ट 25 से रन कर रही हूँ सिटी काउंसिल का इलेक्शन न्यूयॉर्क सिटी में, और मुझे अपनी कम्युनिटी की फुल सपोर्ट चाहिए, क्योंकि पाकिस्तानी होने के नाते मैं ये समझती हूँ कि हमारे अंदर जो जज्बा है ना, वो वॉइस में ट्रांसफ़र होना चाहिए, रिप्रेजेंटेशन में होनी चाहिए हमारी कम्युनिटी के इस मुल्क में और इस शहर में, क्योंकि हम 200,000 लोग हैं इस शहर में, और इतने लोग होने के बावजूद हमारी वॉइस नहीं है. तो इसीलिए मैं रन कर रही हूँ. मैं चाहती हूँ कि हमारी कम्युनिटी रिप्रेजेंट हो और जो इमिग्रेंट्स हैं एट लार्ज वो भी रिप्रेजेंट हो, ताकि हमारे जो इश्यूज़ हैं उनको हम सिटी हॉल में लोगों को अवेयर कर सकें कि हमारे इश्यूज़ क्या हैं, और उसके अकॉर्डिंगली हम बिल्स पास करें और पब्लिक पॉलिसी को उस तरह डेवलप करें जो हमारे बेनिफिट में भी जाए. फातिमा, बड़ी खुशी की बात है कि आपने एक स्टेप लिया है जी, और ये हमारी कम्युनिटी के लिए मशवरा भी है जी कि वो अमेरिकन पॉलिटिक्स में हिस्सा ले. जी. आपने क्या सोच के पॉलिटिक्स में
में हिस्सा लिया और अपनी एजुकेशन के बारे में और आपके जो फ्यूचर में आप क्या करना चाहती हैं कम्युनिटी के लिए? श्योर मैंने ये सोच के इलेक्शन का इंतखाब किया कि हमारे पाकिस्तानी कम्युनिटी को इकोनॉमिक फ्रीडम चाहिए और प्रॉब्लम क्या है कि इवन हम एजुकेटेड होने के बावजूद हम उस रिसोर्सेज को नहीं यूज़ कर पाते जो सिटी प्रोवाइड करती है क्योंकि हमें पता नहीं है कि कौन सी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं. तो अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है और दूसरी बात ये हमें पोलिटिकली एक्टिव होना पड़ेगा पाकिस्तान को छोड़ के अमेरिका के अंदर क्योंकि हमारी इतनी बड़ी कम्युनिटी है अमेरिका के अंदर बसती है तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए इमिग्रेंट कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए मैं चाहती हूँ कि हम आप बेसिकली देखें कि हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं उनके पास हलाल लंचेस नहीं हैं जब वो स्कूल जाते हैं पब्लिक स्कूल में हलाल लंचेस होने चाहिए और दूसरी इस तरह के इश्यूज़ हैं जो हमारी कम्युनिटी फेस करती हैं वो मैं उनको टैकल करना चाहती हूँ. बहुत बहुत शुक्रिया फातिमा. हम काविश एनवाई टीवी की तरफ से और हमारे नाज़रीन की तरफ से पूरी पाकिस्तानी कम्युनिटी आपके लिए दुआ गो है कि अल्लाह ताला आपको इस इंतखाब में कामयाबी अता करें और आप अपनी कम्युनिटी के लिए को काम करें और उनकी बेहतरी के लिए उनकी एजुकेशन के लिए जो भी है उनकी हेल्प कर सकती हैं आप करें. बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू सो मच. नाज़रीन इस वक्त हमारे साथ हमारे एरिया ब्रुकलिन की कांग्रेस वुमेन एवन क्लार्क मौजूद हैं. इनसे बात करते हैं आज जो पाकिस्तान और कश्मीर के हवाले से. एवन डू यू से समथिंग अबाउट टुडे द पाकिस्तानी इंडिपेंडेंट डे एंड अबाउट द कश्मीर इशू? Absolutely. Assalamu alaikum, everyone. I'm Congresswoman Yvette Clarke, and I'm here to celebrate with the Pakistani community here in Brooklyn, 73 years of independence of Pakistan. I'm so proud of this community and all of their contributions, what they have done throughout the pandemic to help so many in the community, to feed people, and they have been an integral part of helping us come through the COVID-19 pandemic. As we reflect on 73 years of independence of Pakistan, we also turn an eye to Kashmir, where so many want to be liberated. And I have said to this community, and I've said in Washington, it is important that we work and we come together to make sure that the people of Kashmir can live freely and that they too can be in a world where they are respected and they are protected. Thank you. Thank you very much. I'm going to just... I can recall the struggle for independence. My family was deeply involved. I was born in 1947 and my family went through this turmoil and about 1.3 million people died as a result when the British promised they will give us protection and they did not. We were actually helpless and people were walking down from India into Pakistan. It was a very, very troublesome time, but the people of our country are very resilient. They always fight back. They've gone through a lot of upheavals, but they never give up. And that's the reason they come over here, they work hard, and they become successful. Yes. And we're proud to have you echo the sentiments that we have towards Kashmir, because Kashmir is the same situation. They're suffering over there, and we want to alleviate the suffering. It's just too much. America used to be a bastion for human rights, and now with this precedent, everything has gone dry. And what has really happened is there is nobody paying any attention. We want to elevate the situation, so make sure the relief is brought to them, and they have given the right, at least for right now, so they can for communications, food, and other stuff, and safety. And then we'll talk about the right to have the independence. United Nations promised them the right of self-determination, and India promised that uphold that, and they have since then did not attempt, but kept on passing new resolutions to postpone it, and ultimately now they have abrogated that solution. So I think for you to raise this issue in the US, we're very proud and very, very thankful to you for having recognized that. So thank you so much. Absolutely, Mr. Siddiqui. Pakistan, Zindabad! Pakistan, Zindabad! चलिए जी, थैंक यू. अब क्या करना है?
مانگتا ہوں الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں کرم مانگتا ہوں عطا مانگتا ہوں الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں جو مفلس ہیں ان کو تو دولت عطا کر. اس وقت ہمارے ساتھ کریم بھٹو صاحب ہیں جو کہ ایک سیاسی شخصیت ہے, سماجی شخصیت ہے, اور کمیونٹی کے جو کام ہیں ان میں بہت بڑھ چڑھ کر کمیونٹی کی ہیلپ کرنے کے لیے حصہ لیتے ہیں. آج یوم پاکستان کے سلسلہ میں ان کے ادارے نے ایک بہت شاندار یہاں پہ یوم پاکستان کے سلسلے میں ایونٹ کا اہتمام کیا ہے, باربیکیو کیا ہے. اس میں پاکستان لائنس کے لوگ اور پاکستانی کمیونٹی کی بہت بڑی تعداد جو ہے وہ شرکت کر رہی ہے. تو بھٹو صاحب آپ بتائیں, آج یوم پاکستان کے سلسلے میں جو آپ نے اتنا بڑا ایونٹ کیا اس بارے میں آج کچھ کہنا چاہیں گے؟ یہ آج ہسٹری میں پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ 20 سے زیادہ آرگنائزیشن, پاکستانی آرگنائزیشن کیم اپ ٹوگیدر اینڈ سیلیبریٹ کر رہی ہیں, جو ایک پاکستان کی یو ایس اے کی ہسٹری میں بہت بڑا دن ہے. تو انشاءاللہ ہم یہ پاکستانی جنریشن کو میسج دے رہے ہیں کہ ہم سیلیبریٹ اس لیے کر رہے ہیں کہ چھوٹی جنریشن کو میسج ملے کہ وی اسٹل لو پاکستان, پاکستان زندہ باد. وشنگ ایوری ون ہیپی انڈیپینڈنس ڈے ٹو آل پاکستانی. پاکستان زندہ باد, گاڈ بلیس پاکستان. ناظرین, اس وقت ہمارے ساتھ آج کے ایونٹ کے نہایت ہی اہم کارکن, لیڈر, جو کہ ایک بہت بڑی سیاسی سماجی شخصیت بھی ہیں پاکستان کمیونٹی بروکلن میں. ان کا ایک بڑا اہم مقام ہے اور یہاں کے جو سماجی کام ہیں ان میں بہت بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں. آج انہوں نے اپنے دوستوں کے ساتھ اور کمیونٹی کے ساتھ مل کے ایک یوم پاکستان کے سلسلے میں بہت بڑے ایونٹ کا اہتمام کیا ہے. اسلم ڈلو صاحب, آپ سے پوچھیں گے کہ آج کا جو پروگرام آپ لوگوں نے یہاں پہ منعقد کیا یوم پاکستان کے سلسلے میں, اس سلسلے میں آپ پاکستان کمیونٹی سے اپنے ویوز شیئر کریں. السلام علیکم, میرا نام اسلم ڈلن ہے, میں پاکستانی امریکن ایسوسی ایشن آف نیو یارک کا پریزیڈنٹ ہوں. آج ہم نے 14 اگست کے حوالے سے یہ پہلا ایونٹ کیا ہے تاکہ کیونکہ کرونا کی وجہ سے باقی پریڈیں جو میلے جو کینسل ہوئے ہیں, لیکن ہم اپنے پاکستان کو یاد رکھا ہے, ہم پاکستان کو بھول نہیں رہے, کیونکہ یہ دن جو ہے ہمارے پاکستانیوں کے لیے, خواہ امریکن ہیں یا پاکستانی ہیں, پاکستان کے لیے یہ بڑے فخر کا دن ہے. اس لیے ہم اسی یاد میں آپ یہ جو پروگرام کیا ہے 14 اگست کا, پاکستان انڈیپینڈنس کا, سب لوگوں کو, فیملیوں کو ادھر بلایا ہے تاکہ وہ ان کو بھی پتہ چلے, بچوں کو بھی پتہ چلے کہ یہ پاکستان جو ہے کس دن بنا تھا اور بزرگوں نے کیسے بنایا تھا. اور سلسلے میں یہ ہم نے چھوٹا سا یہ ایونٹ کیا ہے کیونکہ کرونا کی وجہ سے زیادہ تو ہم کر نہیں سکتے, سوشل ڈسٹنس رکھ کے, ماسک ڈال کے یہ ہم سب اپنے دوستوں, بہنوں, بھائیوں, فیملیوں کو ادھر بلایا ہے. اور ہم انشاءاللہ اگلے سال بھی, آنے والے وقتوں میں بھی یہ 14 اگست کا انڈر پاکستانی امریکن ایسوسی ایشن پانی کے اہتمام سے منایا کریں گے ہر سال. تھینک یو. صاحب نے کہا کہ چھوٹا ایونٹ, اگر یہ چھوٹا ایونٹ ہے تو بڑا ایونٹ پتہ نہیں کون سا ہوتا ہے. بھٹو صاحب, آپ نے بہت بڑا ایونٹ کیا ہے, یہ چھوٹا ایونٹ نہیں ہے. انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ بھی آپ, مجھے پتہ ہے کہ آپ اس سے بھی بڑا ایونٹ کریں انشاءاللہ, کیونکہ کرونا کی وجہ سے یہ چھوٹے ہی ہم سمجھتے ہیں, نہیں تو ہزاروں میں آئیں گے انشاءاللہ. ہم ادھر جو ہے نا ہر مہینے کچھ نہ کچھ کرتے رہیں گے, لیکن پاکستان کے لحاظ سے انشاءاللہ نیکسٹ ایئر جو ہے نا یہ 2-3 بلاک جو ہے نا ہم کلوز کر کے انشاءاللہ پاکستان ڈے پریڈ کا جو اہتمام کریں گے. بہت بہت شکریہ. پاکستانی 14 اگست اور بہت میں نے جذبہ دیکھا, لوگ باہر نکل کے آئے ہیں, آپ دیکھ رہے ہیں کافی کراؤڈ ہے. اور میں سب سے تو ایک عورتیں اور بچے, دیٹس دا مین تھنگ, کیونکہ آئی تھنک ہماری کمیونٹی کو ریپرزنٹیشن چاہیے. اسپیشلی آئی تھنک وومن نیڈ ٹو اسٹیپ اپ مور ان آور کمیونٹی, کیونکہ وومن ہیو اے لاٹ آف ٹیلنٹ, اے لاٹ آف نالج. تو یہ اٹس گڈ ٹو سی سم تھنگ ڈفرنٹ کہ یہاں پہ آئے ہیں. اور جذبہ دیکھیں, آپ ہر بندہ دیکھ رہا ہے, بچہ دے آر ایکسائٹیڈ, دے لو آور کنٹری جو پاکستان ہے. اور یہاں پہ امریکن پاکستانی ایڈوکیٹس گروپ جو آرگنائزیشن کے ساتھ مل کے انہوں نے یہ ہیلپ کی ہے. اور ہم یہاں پہ سینسس کی پوری ٹیم لے کے آئے ہیں. سینسس کے یہاں پہ بندے ہیں, میک شیور کہ جو ہماری پاکستانی کمیونٹی ہے سینسس
फिल आउट करें, इट टेक्स 2 मिनट्स, कोई इमिग्रेशन क्वेश्चन नहीं है। और हम यहाँ पे मास्क भी बांट रहे हैं, फ्री ग्रीन बंडाना भी बांट रहे हैं। यही है कि हम जो हमारी कम्युनिटी है, वी वांट टू मेक श्योर कि वी गेट रिप्रेजेंटेड। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ पाकिस्तान का एक नाम, पाकिस्तान की एक पहचान आबद कश्मीरी साहब, जिनका एक डायलॉग बहुत मशहूर हुआ था, खैर आपकी आपने इनके बहुत से प्रोग्राम कावश टीवी पे भी देखे हैं और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक भी इनका प्रोग्राम आबद कश्मीरी कावश टीवी पे देखेंगे। डॉक्टर साहब, आज आप यौम पाकिस्तान के सिलसिला में इस प्रोग्राम में तशरीफ फरमा है, आपसे बहुत से आपके फैन भी मिल रहे हैं, आपसे कलवी भी ले रहे हैं। आवाम का जोश और जज्बा देख के क्या महसूस कर रहे हैं? बड़ी खुशी हुई, मैनू लग रहा है कि मैं लाहौर ही फिर रहे हैं। इन्ना मज़ेदार लोगों ने जज्बा है, लोगों के विच एडा मज़ेदार उन्होंने जश्न मनाया 14 अगस्त का कि मैनू बहुत मज़ा आया। मेरा दिल करता है कि मैं हर साल इत्थे ही जश्न मनावा इस नहीं और मनावांगा। पिछली बारी चला गया सर पाकिस्तान। बस मेरी दुआ है कि लोग प्यार मोहब्बत में रहें ਤੇ ਇੰਜ ਹੀ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਪੂਰੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਨ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੇ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਡਰਾਮੇ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਅੱਜ ਮੈਸੇਜ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੈਸੇਜ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੈਸੇਜ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਵੀ ਜੀਓ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀਣ ਦਿਓ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਇਹ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖidmat ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣੇ ਖਵਾਓ, क्योंकि हजूर कहते हैं कि जिदा मसाया भुखा सौ जाए तो आप रज के सौ जाए तो जन्नत ही नहीं जा सकता। इस वास्ते अपने नाल जिहड़े गरीब ने और जिहड़े मतलब कमज़ोर लोग ने उन्होंने मदद करो। बस मेरा बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर। And we wish you all God's blessings, many more good prosperous steps towards Pakistan, that is a country that many Muslims look up to for a role model and support. Pakistani community in New York City are very supportive and very well organized, very loud heard in terms of being active with their activities and giving back to the community. We are honored to have so many Pakistani descent NYPD members. As probably heard, we have over 300 Pakistani NYPD members, Pakistani American, and many more blessings for Pakistani people in Pakistan. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 14 अगस्त यौम पाकिस्तान, पाकिस्तान की 74वीं सालगिरह। इस मौके पर हमारी खुशकिस्मती है कि आज हमारे साथ इमाम अहमद साहब यौम पाकिस्तान के सिलसिला में मौजूद हैं। नाज़रीन, इनका मैं क्या तारीफ़ कराऊँ। यहाँ पे जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है, हर कोई इनको बड़ी अच्छी तरह से जानता है कि कोरोना वायरस के दिनों में इतनी मुस्लिम कम्युनिटी की अमवात हुई कि बयान से बाहर है। बहुत एक ट्रेजेडी थी कोरोना वायरस के दिनों में हमारी मुस्लिम कम्युनिटी पे, और उस दौरान हमारे जो इमाम अहमद साहब हैं, इन्होंने अपनी सेहत की और अपनी ज़िंदगी की परवाह न करते हुए हर मैयत को गुस्ल दिया और उसकी तदफीन में उन्होंने अपना भरपूर अपना हिस्सा डाला और ऐसा किरदार अदा किया कि ना सिर्फ पाकिस्तानी कम्युनिटी, बांग्लादेशी कम्युनिटी, इंडियन कम्युनिटी, बल्कि यहाँ की जो अमेरिकन कम्युनिटी है, उन्होंने भी इनको ज़बरदस्त किस्म का खराज तहसीन पेश किया। इमाम साहब अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो आपको यौम पाकिस्तान के सिलसिले में मैं मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा अपने और अपने नाज़रीन की तरफ से। आप कोरोना के दिनों में जो आपने खिदमात अंजाम दिए हैं, इस सिलसिले में थोड़ा सा अपडेट हमारे नाज़रीन को। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम। मैं तो इस काबिल नहीं हूँ कि मैं कुछ भी कर सकूँ। अल्लाह तबारक व तआला ने जो मुझे अता किया, वो बुज़ुर्गों की दुआएं, हमारे बड़ों की दुआएं, आप जैसे भाइयों की और हमारी कम्युनिटी की दुआएं हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुझ जैसे नाचीज़ को
اس ایک عظیم مقصد کے لیے کام کرنے کی توفیق بخشی. تو آپ لوگوں کی دعائیں ہیں, میرا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے. ان دنوں میں جن دنوں میں آپ یہ خدمات انجام دے رہے تھے, فنرل کی, تدفین کی, جو بھی اس سلسلے میں آپ نے ورک کیا, آپ کے دل میں ذرا بار بھی اس وقت خیال نہیں آیا کہ میں بھی اس مرض میں مبتلا نہ ہو جاؤں, یا اپنے جو آپ کام کر رہے ہیں اس سلسلے میں کو آپ کو خطرہ محسوس نہیں ہوا؟ دیکھیں, ہر انسان نے اس دنیا سے چلے جانا ہے, اور جب میں یہ کام کر رہا تھا تو دل میں خیال آتا تھا کہ شاید میں بھی اس مرض کا شکار ہو کے اس دنیا سے چلا جاؤں. تو لیکن ایک یقین ہوتا تھا کہ جو میں کام کر رہا ہوں اس میں اللہ کی رضا شامل ہے, اور اگر میں دنیا سے چلا بھی جاؤں تو میرے خیال میں کوئی گھاٹے کا سودا نہیں ہے. تو آج کل چونکہ کافی حالات بہتر ہو گئے ہیں, تو آپ کو کمیونٹی کی طرف سے, امریکن کمیونٹی کی طرف سے یا میڈیا کی طرف سے کس قسم کا رسپانس, جو آپ نے خدمات دی اس سلسلے میں آپ کو کس قسم کا رسپانس ملا؟ اللہ کا بہت احسان ہے الحمدللہ. آپ جیسے بھائی تمام لوگ الحمدللہ بڑے پیار سے ملتے ہیں, اور اکثر مجھے ٹرکش کمیونٹی کے لوگ بھی مجھے یہ کہتے ہیں کہ ہم جب ٹرکی میں تھے تو آپ کے لیے دعائیں کر رہے تھے. تو جب یہ مجھے پتہ چلتا ہے کہ لوگوں نے پوری دنیا سے میرے لیے دعا کی ان دنوں میں, کہ جس وقت ہم جنازوں کے معاملات سے ڈیل کر رہے تھے, تو الحمدللہ دل خوش ہوتا ہے کہ کوئی ہمارے لیے دعا کر رہے ہیں, کیونکہ ہم سب دعاؤں کے محتاج ہیں. اور یہ ایک اللہ کا بڑا احسان ہے کہ میرے لیے الحمدللہ میری کمیونٹی نے, گھر والوں نے, آپ سب نے بہت دعائیں کی. میں آپ سب کا شکر گزار ہوں. امام صاحب, ہمارے کاوش ٹی وی کے جو ناظرین ہیں پوری دنیا میں, ان کی ایک بڑی خواہش تھی کہ آپ کے ساتھ ہماری ایک ملاقات ہو, اور جس میں ساری باتیں ڈسکس ہوں. اتفاق سے آج یوم پاکستان کے سلسلے میں جو پروگرام ہے اس میں آپ سے ملاقات ہوگی. تو آپ پاکستانی کمیونٹی کو یا مسلم کمیونٹی کو اس حوالے سے کیا میسیج دیں گے؟ میں مسلم کمیونٹی کو ایک میسیج دینا چاہوں گا کہ آپ لوگ آپس میں مل جل کر رہیں, اور اگر کوئی آدمی کسی صورت میں بھی آپ کو لگتا ہے کہ وہ اچھا انسان نہیں ہے, تو آپ اس انسان سے نفرت نہ کریں, اس کی برائی سے آپ کر سکتے ہیں. ہم ایک غلطی کا شکار ہو چکے ہیں کہ ہم لوگوں نے انسانوں سے نفرت کرنی شروع کر دی ہے, جو کہ ہمارے دین کا حصہ نہیں ہے. ہاں, ہمیں برائی سے نفرت کرنی ہے, اور اگر کوئی انسان کسی برائی کا شکار ہے تو یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو اس برائی سے نکلنے میں مدد کریں. ناظرین, اس وقت ہمارے پاس ہیں لا انفورسمنٹ پاکستان کمیونٹی کے نوجوان جو آج یوم پاکستان کی تقریب کے سلسلہ میں آئے ہوئے ہیں, اس میں شمولیت کے لیے, اس پروگرام میں حصہ لینے کے لیے. ان سے بات کرتے ہیں آج پاکستان کے حوالے سے. جی, آپ کا نام سر؟ محمد عبداللہ. محمد عبداللہ, جو آج پاکستان کے یوم پاکستان کے حوالے سے آپ کیا اپنے ینگسٹر کو اپنے پاکستانی یہی کہنا چاہوں گا کہ پاکستان جو ہے وہ ہمارے دل و جان میں ہے, اور پاکستان کے لیے ہمیں کام کرنا چاہیے. اینڈ پاکستان زندہ باد. تھینک یو. آپ کا نام؟ میرا نام عابد رضا ہے, میں بروکلن میں رہتا ہوں. پاکستان کا آج ہمارا انڈیپینڈنٹ ڈے ہے, ہم اس کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے یہاں آئے ہیں. پاکستان زندہ باد. جی, آپ کا نام؟ جی, السلام علیکم. میرا نام احمد صہیب ہے, میں پاکستان سے بلانگ کرتا ہوں, یہاں پہ ویلی اسٹریم میں رہتا ہوں. تو آج ہمارا انڈیپینڈنس ڈے ہے, تو ہم یہاں پہ انجوائے کر رہے ہیں, انڈیپینڈنس ڈے کو منا رہے ہیں. ہم سارے مسلمان بھائی یہاں پہ اکٹھے ہوئے ہیں, ایک پروگرام ہے اس میں سب اکٹھے ہوئے ہیں. تو پاکستان زندہ باد. جی سر. جی, میرا نام محمد آصف ہے. آج انڈیپینڈنس ڈے ہے, اور ہم ماشاءاللہ سب کٹھے بھائی کھڑے ہوئے ہیں. پاکستان زندہ باد. پاکستان زندہ باد. محمد جواد. محمد جواد. ناظرین, اس وقت ہمارے ساتھ سونو بھٹ اور ان کی بیگم. آپ نے ان کو کاوش ٹی وی پہ بہت دفعہ دیکھا ہوگا. یہ ہماری کمیونٹی میں, پاکستان کمیونٹی کی ایک پہچان ہے, گلوکار بھی ہیں اور سماجی ورکر بھی ہیں. بٹ صاحب, آج یوم پاکستان کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ یہ ماشاءاللہ سے بہت ہی اچھا ایونٹ ہے, اور ہم پاکستان میں نہیں ہیں, امریکہ میں رہ کے ہم نے پاکستان کو یاد رکھا ہے, اور ہر سال یہ ہم تہوار مناتے ہیں ماشاءاللہ سے, اور اپنے جھنڈے کے کلر کو یہاں پر دکھاتے ہیں ہر ایک کو کہ ہم یہ پاکستان کا جھنڈا. اور یہ ماشاءاللہ سے دیکھیں
ग्रीन हुए हुए हम दोनों माशाल्लाह से। अस्सलाम वालेकुम मेरी तरफ से सबको। और हम पाकिस्तान की मोहब्बत में, जो पाकिस्तान हमारे दिलों में बसता है, हर वक्त बसता है, और हम पाकिस्तान को बहुत याद करते हैं। और पाकिस्तान की आज़ादी, बल्कि आज़ादी नहीं, पाकिस्तान एक नेमत हमें मिला था, उस नेमत का शुक्र अदा करने के लिए अल्लाह के तरफ से हम यहाँ पे सब इकट्ठे होते हैं और बड़ी खुशी से पाकिस्तानी लिबास पहन के सब्ज़ रंग को प्रमोट करते हैं और अपने पाकिस्तान को प्रमोट करते हैं। और हम बड़ी खुशी से पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सैयद मोहम्मद वसीम है और आज हम लोग पाकिस्तान का यौम आज़ादी कोनी आलन एवेन्यू पे मेरे ख्याल में कभी भी इतना बड़ा, इतनी ग्लैमर कभी नज़र नहीं आया। और यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन है पानी, जो असम डुल्लू साहब हैं, मोहम्मद भट्टू साहब हैं, वो उनका ये सारा इवेंट है और हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं। और सारे पाकिस्तानियों को हमारी तरफ से यौम आज़ादी बहुत बहुत मुबारक। इस वक्त हमारे साथ हैं पुलिस NYPD के लेफ्टिनेंट जनाब ज़ैगम अब्बास साहब, जो कि पाकिस्तानी कम्युनिटी के मसाइल के सिलसिले में हर वक्त एक्टिव रहते हैं कि उनको कैसे सॉल्व किया जाए, कम्युनिटी की किस तरह हेल्प की जाए, यंगस्टर से कैसे उनको लॉ इन्फोर्समेंट में कैसे उनको मोटिवेट किया जाए कि वो इसमें शमूलियत इख्तियार करें। ज़ैगम भाई, आप सबसे पहले आपको आज के इवेंट की बहुत बहुत मुबारक हो, जो आपने पाकिस्तान कम्युनिटी के साथ मिल के इसका इनेकाद किया है और आपका एक बहुत बड़ा रोल है इसमें। आज के हवाले से आप क्या कहोगे? भाईजान, ये एक ऑनर की बात है हम सब पाकिस्तानियों के लिए कि ये 14 अगस्त का दिन अल्लाह ताला ने हमें नसीब किया देखने के लिए, और ये आज़ादी हम सबको मिली है। हम पाकिस्तान के लिए नेक ख्वाहिशात रखते हैं और पाकिस्तान के लिए अच्छा करना चाहते हैं। बाहर के मुल्क में आके भी हम लोग चाहते हैं यूनिटी हो, यूनिटी हमारी स्ट्रेंथ है, हम सब को मिल के करना चाहिए। सारी ऑर्गेनाइजेशन इकट्ठी हुई हैं, हमारे पुलिस वाले भी इंशाल्लाह उन्होंने इवेंट बड़ा अच्छा किया है मिल के, तो हम लोगों को यूनिटी दिखानी है। दैट्स व्हाट वी नीड टू डू दैट। तो पाकिस्तान के लिए इंडिपेंडेंस डे, इट्स एन ऑनर फॉर ऑल ऑफ अस टू सेलिब्रेट हियर इन न्यूयॉर्क विद द फ्रीडम। The police department is supporting us and giving an opportunity to celebrate our own holidays. एक बड़े आज़ाज़ की बात है, फ़ख्र की बात है कि न्यूयॉर्क में रहते हुए भी हम अपने पूरे ज़ौक़ व शौक़ से अपना 14 अगस्त का प्रोग्राम हम मना रहे हैं। हमारे जैसे कि ढोल की दाप भी देख रहे हैं आप, पीछे से ढोल भी बज रहा है, तो बड़ी खुशी हुई इस इवेंट में आके और शामिल होकर। अभी लोग आ रहे हैं, पीछे फ्लोट का इंतज़ाम किया गया है, गाड़ियों का इंतज़ाम किया गया, सारा खाने का इंतज़ाम किया गया सभी के लिए। तो ये अच्छा है, कोरोना के लिए ऑब्वियसली सभी लोग बंद थे, तो उसके लिए भी थोड़ा ओपनिंग थोड़ी हुई है, रिस्ट्रिक्शन थोड़ी कम हुई है, उसके लिए ये इवेंट हुआ है। तो बहुत अच्छा लगा मुझे आके भी और अपनी कम्युनिटी के साथ मिल करके भी। कम्युनिटी की वजह से ही हमारी स्ट्रेंथ है, अगर कम्युनिटी नहीं है तो हम पुलिस वालों की इज्जत नहीं है। कम्युनिटी की सपोर्ट चाहिए होती है, मिल के काम करना है, और यही जो है डिपार्टमेंट हमें कह रहा है, जस्ट वर्क टुगेदर विद ईच अदर एंड हेल्प ईच अदर आउट। एंड आई ग्लैड टू बी अ पार्ट ऑफ अ पुलिस डिपार्टमेंट एंड ग्लैड टू बी अ पार्ट ऑफ अ कम्युनिटी एंड हेल्पिंग माय ओन कम्युनिटी। Thank you, boss. बहुत बहुत शुक्रिया. No, thank you. I have a day. Yes, hi, how are you? It's a pleasure to be here today on this wonderful evening as we're celebrating the Independence Day. We are truly grateful as we continue to partner with our community, as we continue to partner with our NYPD. It is a blessing to be able to work together, collaborate together to sit there and bring a better safe haven for our community. So we're grateful and we're totally honored to be here today. नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ पाकिस्तान कम्युनिटी की एक नहायत ही अहम सियासी और समाजी शख्सियत सैम खान मौजूद हैं। आज के इवेंट जो मैं पाकिस्तान के सिलसिला में जो कोई कोनी आइलैंड पे हो रहा है उसमें शमूलियत के लिए तशरीफ़ लाए हैं और इस इवेंट में इसकी कामयाबी में इनका भी एक बड़ा अहम रोल है। अस्सलाम वालेकुम तमाम देखने वाले काबिश टीवी के, आज का जो दिन है 14 अगस्त, जो कि तमाम पाकिस्तानियों के लिए, स्पेशली जो अमेरिका में रहने वाले पाकिस्तानी हैं जिनका ताल्लुक़ पाकिस्तान से, हालांकि वो रहते हैं अमेरिका में हैं, मे भी अमेरिकन सिटीज़न भी होंगे, लेकिन उनका दिल जो अभी भी है पाकिस्तान के लिए धड़कता है। और जब भी इस तरह के मौके आते हैं तो तमाम पाकिस्तानी, चाहे वो इस तरह बड़ी छोटी जो भी इस तरह के होती हैं, बहुत सारी मुख्तलिफ तंजीमें, सब पूरे अमेरिका में, पूरे ग्लोब में मनाते हैं। और हम सबको इस तरह एक मैसेज भी देना चाहिए अपनी कम्युनिटी को, स्पेशली हमारे जो बच्चे हैं
जिनको हमारे कल्चर का नहीं पता, जो यहाँ पैदा हुए हैं, उनको हम ये बताते हैं कि हमारा हेरिटेज क्या है, हम कौन लोग हैं और इस ग्रीन झंडे का मकसद क्या है, इस ग्रीन झंडे के लिए कितने लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं, ये जो पाकिस्तान पाक वतन जो नाम है उसके पीछे किन किन लोगों की कुर्बानियाँ, कितने मिलियंस ने कुर्बानियाँ दी हैं। तो आज हम इस मुकाम पे पाकिस्तान के पासपोर्ट के नाम पे हम हाँ अमेरिका में भी काम करें, अमेरिका में भी हम अपने बिजनेसेस हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं और हमारा एक नाम है। तो ये मेरे ख्याल से अपनी इस कल्चर को, अपने इस तमद्दुन को और अपने इस मुल्क को हमें नहीं भूलना होगा और इस तरह के त्यौहार हमें हमेशा सेलिब्रेट करने होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर।